Hello students, now we are here with our new topic, grouping of cells. So there is three type of grouping, that is series grouping, then parallel, and then mixing. Mixing means series and parallel grouping of cells. So grouping of cells we need because we have some devices where more potential is required, more potential difference is required. So for those type of devices we need grouping of cells. So in grouping of cells, firstly we are going to study series grouping of cells, and in series grouping of cells we are taking firstly the case identical cells connected in series. अब आपको पता है that series connection होता है end to end connection. End to end connection mean the here we are talking about the cells. So here we have positive terminal, this is negative. So negative of first cell is connected with the positive of second, and then so on. So here we have n number of identical cells, each of internal resistance small r, and connected across external resistance R. ये देखो n number of cells we are having here, and each of EMF E and internal resistance R, and connected across the external resistance R. Okay, now this grouping of cells will sense the current I through this external resistor R. So this current we have to find out. And we have to find out what is the amount of current that is coming from these n number of cells having an internal resistance R. Okay, so because current from series combination of cells is I is equal to effective EMF of cell, because here number of cells, and divided by effective resistance, because I क्या होता है अपने पास V upon R. So in place of V we are taking here E, that is maximum current. Here we can write maximum current, and in place for maximum current we have maximum EMF, and here are total resistance, because in series internal resistance get added with the external resistance. So effective EMF that we can write I is equal to, here we have n number of cells and each of EMF is E, so then we can write effective EMF that is equal to N E, and effective resistance that is R, this resistance plus N R, because all the resistances are in series. So series में resistance हो जाती है add. तो add करने में क्या बनेगा अपने पास, देखो R plus R up to n time. तो here we get R1 plus 1 plus up to n. So we get here N R. In this way we can find out effective EMF and effective internal resistance. So this is our effective current that is coming from these cells. Suppose we have 10 cells, for example 10 cells connected in series, and each of EMF that is equal to 1.5, let us put to the total EMF that become 20 volt. Clear this is? So up here we have special cases. First one is if R is greater than NR, external resistance more than that of NR small internal resistance. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस. मीन टू से दैट आपने बैटरी देखी होगी घर पे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और 2 or 3 cells are connected in series, and the resistance of that bulb is more than that of the internal resistance. Okay, then R that can be
is equal to 0. So we can write R plus NR, that is approximately is equal to R, or neglecting this internal resistance, then we get I is equal to NE over R, that is equal to N into E over R. Now this E over R, what is this? This is the current. This is what E upon R, that is current drawn from the cell. देखो, that is equal to n times the current, that is I is equal to n times the current drawn from the cell. This one. It means when n number of cells are connected in series and external resistance is more than, then there is a maximum current is drawn from the cell. That is maximum current drawn from series combination. Maximum current can be drawn from the series combination. This is very important result. And if we take second case where R is less than NR, so we can write R plus NR, that is equal to NR, or neglecting R, then I become is equal to NE upon N, sorry यहाँ पे small r, this cancel, E upon R. So you see here current due to single cell, और करंट देखो यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर. कैपिटल आर जो होगा उसके थ्रू क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, मतलब जो रजिस्टर है वो करंट को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सेल्स. और यहाँ क्या लिखा E अपॉन आर, दिस इज ऑल्सो करंट, बट दिस करंट इज, और यहाँ लिख रहा हूँ करंट गिवन बाय द सेल, गिवन बाय द करंट ड्यू टू गिवन बाय द सिंगल सेल. दिस करंट इज गिवन बाय द सिंगल सेल. सो व्हेन, अब दिस इज द कॉमन सेंस, और वी कैन से दैट जब अपने पास क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, वी कैन दैट सेल के हो रखा है वीक हो रखा है, सेल के हो रखा है वीक हो रखा है, और जो बल्ब लगा रखा है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है. तो यू नो दैट ओनली देन सिंगल सेल विल गिव द करंट. देन वी कैन से दैट नो मीन ऑफ कनेक्टिंग number of cells in series. अगर अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ डेड सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, then there we will get only the current from a single cell. The no mean of connecting large number of cells in a series. So these are the very important two cases. And if I am talking about here, if I will talk here about second case, that is different cells connected in series. Different cells are connected in series. Different cells mean, मान लो अपने पास ये दो सेल है, ये देखो फर्स्ट दो रख लेते हैं, चलो लेट अस सपोज वी हैव ओनली टू सेल्स. आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये ईएमएफ कितना है E1, ये कितना है E2, ये R1 है और ये क्या है R2. देन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इज I इज इक्वल टू इफेक्टिव. देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफेक्टिव ईएमएफ. तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है, E1 प्लस E2. देखो ये देखो NE, तो यहाँ तो हर एक सेल का ईएमएफ कितना था, E था. अब यहाँ पे क्या लिख दिया, E1 प्लस E2, डिफरेंट है. एंड R plus series में resistance R add होती है R1 plus R2. And if we have n number of cells, n number of different cells, then E1 plus E2 plus E3 and so on up to n time, then R is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. So in this way we can calculate the current. And one more thing is, if we have this, already I have talked to you, or already I have discussed in one of the topic, if cells are connected with similar polarity, ये E1 है, ये E2 है, and ये resistance आ गई R1 and R2, and they are connected with external resistor R, then
आई इज इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ। नो, अब इनको बोलते हैं ऑपोजिट मैनर। ये जो सेल कनेक्ट कर रखे हैं ये क्या है, ऑपोजिट मैनर में। और जो पहले जो सेल कनेक्ट करके जहाँ पे नेगेटिव किसके साथ है, पॉजिटिव था, उसको बोलते हैं हेल्पिंग मैनर। हेल्पिंग मैनर, एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं, यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा वो E1 माइनस E2 एंड R प्लस R1 प्लस R2, this one, this you have to note down because here negative is connected with the negative. Okay, this is, so in this way we can study the grouping of the cells. And if we take a number of cells, suppose we have 4 cells are connected in helping manner and 1 cell is connected in opposite manner. देखो 2 cells are connected in opposite manner. देखो ये है E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4, ये है E5, ये क्या है E6, और ये कनेक्ट कर दिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट कर दिए। और इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी क्या R4, इसकी क्या R5 और इसकी कितनी है R6। तो इफेक्टिव करंट कितना आएगा, देखो I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। देखो E1, E2, E3, E4 दे आर इन हेल्पिंग मैनर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। फिर उनका ईएमएफ क्या कर दिया, सम कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या इसको हेल्प कर रहा है। अगर अब मैं इसको, चलो इसको यहाँ E6 भी कर देते हैं, और ये इनमें से क्या है, अपोजिट मैनर में कनेक्ट है, तो माइनस E5 divided by R plus R1 plus R2 up to R5, R6. So in this way we can calculate their EMF. So I think this topic is clear to all of you. Thank you.